Just a accident up here. Interstate 18 Wyoming जो है खराब मौसम की वजह से Trucks. IAT जो है बंद है, तो इस वजह से जो है ये देखें खराब मौसम की वजह से IAT पे जो है तेज़ हवा है, बर्फ़बारी, बर्फ़ानी तूफ़ान जो है IAT पे। फिर जो है ये आपको वीडियो में जो है दिखा रहे हैं ट्रक जो है IAT पे जो है हवा की वजह से और बर्फ़बारी की वजह से जो है ट्रक जो है वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। आपको जो है ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये एक जो है हाईवे IAT की कंडीशन है। Illegal. Jackknife too. Yeah, baby. Come on, guys. I don't know what's going on here. Getting out of his truck. His vehicle. He might have a flat tire right there. Blowing pretty good right here. Well, snow. This is where Grant did a 180 once. Truck and trailer. Right here. Before you drop down to Medicine Bow River. People stopping on the side of the road. Crazy people. Crazy. इसलिए जो है सफ़र करें IAT पे तो बहुत ही एहतियात और ख्याल के साथ सफ़र करें। Oh, he's putting on chains. It's that guy from California. Well, keep getting better. एहतियात जो है बहुत ज़रूरी है। एहतियात खतरा से जो है खतरा से बच सकते हैं। एहतियात बहुत आराम से सफ़र करें ताकि आप जो है महफूज रहेंगे। तो आपको जो है ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं IAT से। Well, I ain't gonna get as far as I wanted to. Not like this. 24 mile an hour. Close to high profile vehicles. 60 mile an hour crosswinds. And idiots, it doesn't say. Oh, this is right by Elk Mountain exit. Just about anyway. इस हवाले से जो है आपको फुटेज दिखाए गए हैं IAT से। जो है आप अगर सफ़र करना चाहते हैं तो ये जो है सफ़र के लिए जो है एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस वजह से सड़कें बंद हो रही हैं तो बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से, तो इस वजह से जो है आप महफूज रहें और आराम सुकून से अपने ट्रक पे ड्राइविंग करें ताकि आपको जो है सफ़र हादसा से जो है बच सकें और आप जो है महफूज रहें। And they've had the speed limit 75, 55, 35, now 45. ताकि आप तक जो है न्यू अपडेट वो पहुँचे। तो आपको जो है ये फुटेज दिखाएँ ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। Hopefully from here it gets better. वीडियो